I said yesterday was my last lecture, but Dr. Bushra could not take this lecture, so I am taking it. And with it, inshallah, we'll be finishing what I had already started with you. We were doing coronary circulation. We finished that. We are going to do ischemic heart disease, because ischemic heart disease will tell you the last part of shock that we were doing, that is कार्डियोजेनिक शॉक. ठीक है, तो ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज इतना जितना मैंने इसमें पढ़ा रही हूँ इतना आपके कोर्स में इंक्लूडेड है. ठीक है जी. अब इस्कीमिक हार्ट डिजीज का क्या कॉज है? मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज इज एथेरोस्क्लेरोसिस, और किन में होगा ज्यादा? इन पीपल हु हैव जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू एथेरोस्क्लेरोसिस, और इन पीपल हु ईट एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल and have a sedentary lifestyle. Large quantities of cholesterol gradually become deposited beneath the endothelium. अच्छा, ये चीजें बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, आप कह सकते हो कि जी पहले जमाने में तो लोग कितना ज्यादा फैटी फूड्स खाते थे, उनको तो कुछ नहीं होता था, तो हम खा लेंगे तो क्या होगा. मसला ये बेटा कि आपका साथ साथ ये भी तो है ना, दिस इज द प्रॉब्लम दैट यू हैव, सेडेंटरी लाइफस्टाइल. तो आप हाई फैटी फूड्स खाएं, बट इफ यू हैव अ गुड वर्कआउट या यू आर डूइंग फिजिकल एक्टिविटी, तो फिर वो इतना मैटर नहीं करेगा, या चलो देर में करेगा, या फिर अगेन इट विल डिपेंड अपॉन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पे. क्यों डिपेंड करेगा? रीजन कि आपको पता है कि डायबिटीज भी जो है ना वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पे होती है. एक इंसान जिसके अंदर जीन नहीं है टाइप 2 डायबिटीज के, वो और एक जिसमें है, अगर दोनों एक जैसी ही डाइट लेंगे, ठीक है, तो जिसको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है उसमें डेवलप हो जाएगी, और जिसमें नहीं है वो नहीं है. ठीक है, फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिसको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है वो कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली जिसके पेरेंट्स हुए हैं, जिसके बहन भाइयों का है या फैमिली में है, तो आ जाएगी ना जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. उसको चाहिए कि वो शुरू से ही अपने आप को प्री डायबिटिक कंसिडर करें. इसी तरह जिसमें हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, या जिसकी हिस्ट्री है डिसलिपिडीमिया, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिसलिपिडीमिया है, उसको तो बेटा फिर केयर करनी पड़ेगी ना, बिकॉज दैट इज गोइंग टू लीड टू इस्कीमिक हार्ट डिजीज. एंड यू नो दैट दिस इज अ साइलेंट किलर. क्यों? क्योंकि आपकी जितने भी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स बन रहे हैं वो आपके माथे पे लिखे नहीं आएंगे कि इतने परसेंट बन गए, इतने परसेंट बन गए. उसमें फिर एंड में जाके इस्कीमिक हार्ट डिजीज ही करना है, तो फिर आपको पता चलेगा कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई है. So large quantities of cholesterol gradually become deposited beneath the endothelium at many points in the arteries throughout the body. Gradually, these areas are deposited invaded by fibrous tissue and quickly become calcified. ठीक है. Net result क्या होगी? These atherosclerotic plaques are going to protrude into the lumen and either block or partially block the blood flow. अच्छा, acute coronary occlusion हो जाएगी. कैसे? Atherosclerotic plaque which can cause a local blood clot. अब ये कैसे होगा? बात ये है कि if you have made a protrusion into the blood vessel, so what is going to happen? Blood is going to come and it is going to strike that occlusion. Now when it strikes, so blood is going to contain platelets too. एक बात ये कि प्लेटलेट वहां जाके चिपक जाएंगे, और जब प्लेटलेट वहां जाके चिपक जाएंगे तो क्या होगा कि they are going to invite other platelets to come and stick. आपको पता है ना कि जो 3 components थे, प्लेटलेट स्टिकिंग, देन प्लेटलेट एक्टिवेशन, और फिर प्लेटलेट प्लांट. ठीक है ना. तो ये उसकी आंखें तो नहीं है प्लेटलेट की कि उसको पता चले कि जी नहीं नहीं यहाँ पे मुझे नहीं चिपकना, ये तो सिर्फ एक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक है, ये तो वो there is no break in the endothelium, it's going to just go and stick. ठीक है. फिर क्या होगा? अगर उस पर स्टिक हो गया तो उसको इनवाइट मोर प्लेटलेट्स होगा तो उसको थ्रोम्बस बनेगा. ठीक है, और थ्रोम्बस बनता जाएगा. ये क्या होगा? इट इज गोइंग टू क्लीव द आर्टरी. Thrombus usually atherosclerotic plaque through the endothelium, thus becoming direct contact. Because the plaque presents an unsmooth surface, blood platelets adhere to it, fibrin deposit, red cells become trapped, and so we have a full-blown clot. ठीक है. अच्छा, अब बात ये है कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक जो है ना वो सब एंडोथेलियल बनती है. इसका मतलब है कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो तो एंडोथेलियम के नीचे है, लेकिन थ्रोम्बस जो है ना बेटा वो एंडोथेलियम के ऊपर है. तो
एथरोस्क्लेरोटिक प्लैक तो ब्रेक ऑफ करके नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो है ही एंडोथेलियम के नीचे, वो कैसे ब्रेक ऑफ करे? थ्रोम्बस जा सकता है, ठीक है? So thrombus can occlude this vessel where it is formed, plus it can go and occlude any other vessel further down in line. ठीक है? Occasionally, the clot breaks away from its attachment to the atherosclerotic plaque and flows to a more peripheral branch of the coronary arterial tree, where it blocks the artery at that point. A thrombus that flows along the artery in this way and occludes the vessel more distally is called an embolus. Many clinicians believe that local muscular spasm of the coronary artery also can occur. The spasm might result from direct irritation of the smooth muscle of the arterial wall, obviously, क्योंकि आपने उसके ऊपर atherosclerotic plaque चिपकाया हुआ है, or it might result from local nervous reflexes that cause excess coronary vascular wall contraction. The spasm may then lead to secondary thrombus of the vessels. Secondary thrombus क्यों? क्योंकि पहले वो thrombus था, वो टोटली occlude नहीं कर रहा था, अब उसको spasm में कर देंगे तो फिर शिक्षा हो जाएगी ना, तो secondary thrombus जो है ना वो फिर वो occlude है. अच्छा हाँ जी, अब आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में कि एनास्टोमो पूरी बॉडी में एनास्टोमोसिस पढ़ा है ना, लेकिन अफसोस की बात ये है कि इन यंगर एज देयर आर फ्यू इफ नो communications in the heart. Okay? In a normal heart, almost no large communications exist among the larger coronary arteries, but many anastomosis do exist among the smaller arteries sized 20 to 250 macrometers in diameter. When a sudden occlusion occurs in one of the larger coronary arteries, the small anastomosis begin to dilate within seconds. But the blood flow through these minute collaterals is usually less than one half of that needed to keep alive most of the cardiac muscle cells that they now supply. The diameters of the collateral vessels do not enlarge much more for the next 8 to 24 hours. इसलिए ड्रामेटिकली जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है तो उसके अटेंडेंट्स को कहा जाता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स क्रिटिकल है. क्यों? क्योंकि वी डोंट नो कि एनास्टोमोसिस कितने हैं, या एनास्टोमोसिस में क्या इतना ब्लड आ सकेगा कि वो जो इन्फेक्टेड एरिया है उसको प्रिवेंट करे इन्फेक्शन से, और उसकी जस्ट टू कीप अलाइव दोस कार्डियक मसल सेल्स वो हो सकेगा. ठीक है, वी डोंट नो, so we are still this time is critical. But then collateral flow does begin to increase, doubling by the second or third day and often reaching normal or almost normal coronary blood flow within about 1 month. ठीक है, तो पेशेंट जो सर्वाइव कर जाएगा, लकीली अगर उसको इंफार्क्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, आप उसको रेस्ट देंगे, उसको दवाई देंगे तो 1 मंथ तक उसकी anastomosis build हो जाएंगे. Because of these developing collateral channels, many patients do recover almost completely from various degrees of coronary occlusion when the area of muscle involved is not too great. अच्छा, myocardial infarction. Majorly after an acute coronary occlusion, blood flow ceases in the coronary vessels beyond the occlusion, except for small amounts of collateral, blood, collateral flow from surrounding vessels. ठीक है जी, तो क्या हुआ कि coronary artery occlusion हुआ, ब्लड फ्लो सीज हो गया, और थोड़ी सी जो collateral area से आई है, only that is going to remain. ठीक है, so the area of muscle that has either zero flow or so little flow that cannot sustain cardiac muscle function is said to be impacted. तो अब उस collateral से अगर उस एरिया को इतना नहीं आ रहा कि वो सस्टेन कर सके even the simple life of that cell, क्योंकि आपने तो patient is bedridden, आप उसको कुछ भी other than the normal basic cardiac output तो कुछ भी नहीं चल रहा ना. ठीक है, but अगर वो भी नहीं हो सकेगा तो फिर क्या होगा, there will be myocardial infarction. After the onset of the infarction, small amounts of collateral blood begins to seep into the infarcted area, and this combined with progressive dilation of the local blood vessels
causes the area to become overwhelmed with stagnant. एक और क्या मसला हो जाएगा जी, इंफेक्शन हो गई, फिर कोलेट्रल तो बेचारा जाना चाह रहा था ना उसके अंदर, लेकिन अगर नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर स्लिप करना शुरू हो जाएगा, फिर क्या होगा, there is going to be dilatation of the local blood vessels causing the area to become overwhelmed with stagnant blood. Simultaneously, the muscle fibers use the last vestiges of oxygen in the blood, causing hemoglobin to become completely oxygenated. Cardiac muscle requires about 1.3 milliliters of oxygen per 100 grams of muscle tissue per minute just to remain alive. ये MCQ question. इससे प्लीज ये नोट कर लें, या आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे देंगे, वो स्टेम दे देंगे, बेशक कार्डियोजेनिक शॉक का दे देंगे, ठीक है, और कार्डियोजेनिक शॉक का इतना लंबा सारा दे के नीचे आपको डिफरेंट 1.3 दे देंगे, 4 मिलीलीटर दे देंगे, 0.3 दे देंगे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 1.3 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन per 100 grams per minute just to remain alive. This is in comparison with 8 milliliters of oxygen per 100 grams given to the normal resting left ventricle each. तो बेचारे को, कार्डिक मसल को, मासूम को सिर्फ 1.3 चाहिए जिंदा रहे, ठीक है, इतना भी आप दे देंगे तो वो कहेगा जी बड़ी मेहरबानी आपकी, Therefore, if there is even 15 to 30% of normal resting coronary blood flow, muscle will not die. The central portion of a large infarct where there is almost no collateral blood flow, the muscle will die. Remember yesterday I told you about the subendocardial area. मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा subendocardial area है जहाँ पर आप infarction होगी, और रीजन क्या थी कि एंडोथेलियम तो ले लेगी वहाँ कहाँ से, it's going to take from the blood within, और एपिकार्डियल वेसल से जो नीचे आ रहा है ब्लड प्रोग्रेसिवली, subendocardial region is the last part that is going to be supplied, इसीलिए subendocardial muscle. ये अगेन MCQ क्वेश्चन है कि वो आपको पूछेंगे कि भी कौन सा एरिया जो है ना सबसे ज्यादा it's going to have the greatest branch of the decrease in supply. Now, subendocardial muscle frequently becomes infarcted even when there is no evidence of infarction in the outer surface tissues of the heart. The reason for this is that the subendocardial muscle has extra difficulty obtaining adequate blood flow because the blood vessels in the subendocardium are intensely compressed by the systolic contraction of the heart. Actually. Now, what are the causes of death after acute coronary infarction? अभी हम असल में तो कार्डियोजेनिक शॉक ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? The most important cause of death after acute myocardial infarction is decreased cardiac output. क्यों? जब infarction हुई भी है तो किस तरह contract करेगा heart? Then damming of blood in the pulmonary vessels and then death resulting from pulmonary edema. Why? Back pressure. क्योंकि अगर वो left atrium सही से contract नहीं हो रहा होगा तो क्या होगा? अगर लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं कंट्रैक्ट करेगा तो वो डैमिंग ऑफ ब्लड करेगा लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया करेगा पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में, और उससे बैक प्रेशर होगा तो क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा. देन फिब्रिलेशन ऑफ द हार्ट विल occur and occasionally rupture of the heart. रप्चर क्यों? यूजुअली इसलिए क्योंकि जो इंफार्क्टेड एरिया वहां पर फिलिंग हो जाएगी ब्लड की, एंड ऑल्सो बिकॉज द ब्लड इज नाउ बीइंग डायलेटेड, ब्लड है उससे भी इंफेक्शन रप्चर्स. होल्ड ऑन. आगे back. So, decrease in cardiac output, systolic stretch, and cardiac shock. And some of the cardiac muscle fibers are not functioning, and others are too weak to contract with great force.
overall pumping ability of the affected ventricle will depress, obviously. So when the heart becomes incapable of contracting with sufficient force to pump enough blood into the peripheral artery, cardiac failure and death of the peripheral tissue is going to ensue, and this is called cardiac shock. So the end result of coronary artery occlusion, myocardial infarction, coronary shock, cardiogenic shock, or cardiac shock, or low cardiac output. Now, somebody has a mic on, would you please put it off? On. Angina pectoris. What is that? Most people who develop progressive constriction of their coronary arteries, cardiac pain, also called angina pectoris, begins to appear whenever the load on the heart becomes too great in relation to the available coronary blood. ठीक है. अब आपको पता है कि सबसे जो तकलीफ है और सबसे जो मैसिव पेन है ना बॉडी की, वो इस्कीमिक पेन है. क्यों बोला? कि जब उसको ऑक्सीजन नहीं जा रही, न्यूट्रिशन नहीं जा रहा, तो वो चीखे मारेगा ना. तो उसकी जो चीख है ना, वो मुंह से नहीं निकल रही, उसकी पेन रिसेप्टर्स आर गोइंग टू बी मैसिवली स्टिमुलेटेड, एंड नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मैं अपने आप को लानत भेजता हूं. मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो. कौन angina pectoris begins to appear whenever the load on the heart becomes too great in relation to the available coronary blood. This pain is usually felt beneath the upper sternum over the heart, and in addition, it is often referred to distal surface areas of the body, most commonly to the left arm and left shoulder, but also frequently to the neck and even to the side of the head. ये तो आपको आना ही आना. रेपिड पेन सबसे कॉमन सिनेरियो जो है ना, वो रेपिड पेन का लेफ्ट आर्म, लेफ्ट शोल्डर और नेक को आएगा, एंड इवन टू द साइड ऑफ द फेस, और ये एंजाइना पेक्टोरिस है. और कॉर्नरी आगे आपसे पूछेंगे, वो कार्डियोजेनिक शॉक पूछ सकते हैं, कॉर्नरी आर्टरी सर्कुलेशन पूछ सकते हैं. सिनेरियो ये आएगा यूजुअली, मोस्ट कॉमन. Most people who have chronic angina pectoris feel pain when they exercise or when they experience emotions that increase with the rhythm of the heart or temporarily constrict the coronary vessels because of sympathetic vasoconstrictor nerve sickness. Achha. Now this finishes cardiogenic shock. Few things from the circulation. So another thing is cardiac index. ये आपको जितना कॉमनली आपसे कार्डिक आउटपुट पूछा जाएगा, उतना ही कॉमनली कार्डिक इंडेक्स पूछा जाएगा. अब कार्डिक इंडेक्स क्या होती है? कार्डिक आउटपुट इंक्रीजेस अप्रॉक्सीमेटली इन प्रोपोर्शन टू द बॉडी सर्फेस. ठीक है जी. अब क्या है जी कार्डिक आउटपुट? इट इज द रिलेशनशिप ऑफ कार्डिक आउटपुट विद सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी. ठीक है जी. ये इन दो चीजों का रिलेशनशिप. सो cardiac output is frequently stated in terms of cardiac index, which is the cardiac output per square meter of body surface. ये वैसे कुछ एक्सटर्नल का बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन होता है वाइवा का, और कार्डियक इंडेक्स पे आपको जरूर एमसीक्यू को जरूर आएगा. ठीक है, बिकॉज इट इज sometimes cardiac output is expressed as cardiac index. The average person who weighs 70 kilograms has a body surface area of 1.7 square meters. ये कैसे हमें पता चला? ये हमने कैलकुलेट करके रखा. ठीक है जी. So it means that the normal average cardiac index for adult is 3 liters per minute per meter square of body surface area. ये आप ठीक है जी. This is data you should know. कि 70 kg man का 1.7 square meters है. अच्छा, अब आप इसको आप क्वेश्चन आ सकता है कि जी
अच्छा 80 kg का आदमी है और उसका जाहिर है 1.7 से ज्यादा ही होगा ना, तो फिर क्या कैलकुलेट करोगे? तो आपको ये कैलकुलेशन आ सकती है, सिंपल मैथ। And now effect of age on cardiac output. Obviously, cardiac index जो होगा, what is the effect of age on cardiac output? Cardiac index at different ages तो कैसे करें? Okay. मैम दोबारा शेयर करें, वो डॉक्यूमेंट शेयर करें, डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए। हाँ ठीक है जी, कंटिन्यू करें। All right, so we are back online. Cardiac index at different ages. The cardiac index rises rapidly to a level greater than 4 liters per minute per meter square at ages 10 years. अब आप ये देखिए कि normal 70 kg adult में कितना है जी? It is much less. Okay? So we were here saying it is 1.73 liters per minute or per meter square. Okay? और 10 years में 4 liters per minute होगा और declines to 2.4 liters per minute per meter square at age 80 years. ये तीनों आपने याद रखना, ठीक है? तो 70 kg adult था, ठीक है? 10 years एक एक्सट्रीम है, 4 liters से जो हायर है, ठीक है? And this is mainly due to the fact that cardiac output is regulated throughout life almost directly in proportion to the overall metabolic activity. Therefore, the declining cardiac index is indicative of declining activity and or declining muscle mass with age. अच्छा, अब cardiac index भी खत्म हो गया. अब यहाँ पे certain things that are important to note about venous return and the systemic circulation. ठीक है? थोड़ी सी चीजें जो पता होनी चाहिए, बट क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि इनके ऊपर एमसीक्यू भी आता है और इनके ऊपर आपको मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर के ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, ठीक है? So there are three principal factors that affect venous return to the heart from the systemic circulation. अब venous return याद है ना क्या था? Cardiac output में हमने पढ़ा था ना बेटा, venous return which was affecting the end diastolic wall, ठीक है ना? और फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ भी उसके साथ कनेक्ट हो रहा था, right? So this is the venous return we are talking about. What are the three principal factors? Right atrial pressure. कैसे? It exerts a backward force onto the veins to impede flow of blood from the veins to the right. मैंने आपको बताया था कि उसको जीरो होना चाहिए. अगर वो जीरो से थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा तो large impedance of flow हो जाएगा, ठीक है ना? So it should be zero or even less, and that is going to help. Then degree of filling of the systemic circulation, and how do we gauge that? Measured by mean systemic filling pressure. अब ये एक word है जो आपको आना चाहिए.
अभी इसकी मजीद मैं एक्सप्लेनेशन आगे जाके देती हूँ. You should know what is mean systemic filling pressure. This forces the systemic blood towards the heart. So this is the pressure measured everywhere in the systemic circulation when all blood flow is stopped. Simple अब mean systemic filling pressure का आपने क्या definition देनी है कि when the system in the systemic circulation, इसका मतलब ये pulmonary की बात नहीं कर रहे. अगर आप momentarily theoretically stop कर दोगे circulation, ठीक है, वैसे तो नहीं हो सकती ना, अब ये तो हाइपोथेटिकली आप बात करें तो एवरीवेयर इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो फिलिंग प्रेशर होगा उसका, उसको कहेंगे हम मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर. ठीक है जी. तो ऑब्वियसली अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड ही नहीं है तो वेनस रिटर्न क्या होनी है, तो फिर डिपेंड करेगा ना मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर. ठीक है. अब ये देखो मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर वो ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मीन वीनस फिलिंग प्रेशर, इट इज द मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर मीन्स कि आर्टरीज और वेन्स दोनों इंक्लूडेड है. कैपिलरीज क्यों नहीं है, क्योंकि कैपिलरीज में तो मसल ही नहीं है. ठीक है. रेजिस्टेंस टू फ्लो बिटवीन द पेरिफेरल वेसल्स एंड द राइट एट्रियम. ऑब्वियसली अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगी तो क्या होगा, राइट एट्रियम को ब्लड नहीं जाएगा. और कहाँ ज्यादा रेजिस्टेंस की हम बात करें, ये वेन्स में. ठीक है, क्योंकि आर्टीरियोल्स में तो होनी है. ठीक है. तो एक्चुअली देयर इज अ पैराडॉक्स गोइंग ऑन. क्या पैराडॉक्स है कि एक तरफ तो आपको जी आप कहती हैं कि जी कार्डिक आउटपुट तब मेंटेन होगा जब वेन्स कंस्ट्रिक्ट होंगी और जब ब्लड वापस आएगा राइट एट्रियम को. ठीक है जी. दूसरा आप कह रही है कि अगर टू मच रेजिस्टेंस हो जाएगा तो कम ब्लड आएगा. ठीक है ना. तो बेटा इसीलिए सर्कुलेशन इतना मुश्किल है कि ये डेलिकेट बैलेंस है इन सारी चीजों में. वीनस रिटर्न को आपने एडिक्वेट भी बनाना है और वीनस कंस्ट्रिक्शन इतनी भी नहीं करानी कि वेन्स सारी की सारी कंस्ट्रिक्ट हो जाए. अब वेन्स वैसे भी कंस्ट्रिक्ट नहीं होगी इतनी ज्यादा, क्यों बेटे उसे मसल ही हो ही नहीं सकती. जितनी आर्टीरियोल्स कंस्ट्रिक्ट हो सकती हैं उतनी वेन्स आपको पता नहीं हो सकती. क्यों, क्योंकि हमें कुछ स्केलेटल मसल पंप्स चाहिए उसको चलाने के लिए. ठीक है. तो वेन्स अगर 100% भी कंस्ट्रिक्ट हो जाए तो वो 100% पुलिंग ऑफ ब्लड नहीं करा सकती. और वैसे भी आपको पता है जीरो तो कुछ भी नहीं होता बन. अब ये जो है ना आपको समझना है. दिस इज द ओनली चार्ट that you have to of the venous return curve that you have to draw in your sketchbook and you have to learn कि ये क्या है. अब this is a very simple सा. देखो इसमें right atrial pressure एक तरफ दिया हुआ और एक तरफ venous return. राइट एट्रियल प्रेशर आपको क्या है, नॉर्मल क्या होता है, जीरो. जीरो दिया. ठीक है जी. एक तरफ उसकी नेगेटिव वैल्यूज है, दूसरी तरफ उसकी पॉजिटिव वैल्यूज है. वीनस रिटर्न आप देखिए, वीनस रिटर्न इन लीटर्स पर मिनट दिया हुआ है. ये क्या वैल्यू है, तकरीबन 5.5 होगी ना, वो 5 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा. ठीक है. अच्छा, अब आप प्लेटो फेज है, वो कह रहे हैं कि जी जब अब माइनस में अगर है. अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज नोट करने की जरूरत है कि आपने जो मैक्सिमम है वो -4 है. इसका मतलब अगर आप राइट एट्रियल प्रेशर आप कहे कि जी मेरा तो दिल चाहता है मेरे पेशेंट में ना -100 होना चाहिए राइट एट्रियल, ताकि उसका ना ब्लड जल्दी वापस. तो यहाँ पे वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि बेटा -4 से आप जितना मर्जी आगे कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So the greatest value that you need to achieve is -4, लेकिन उतनी भी नहीं होती. आपने इस ट्रांजिशनल जोन में रहने की जरूरत है, फ्रॉम 0 to -4. ठीक है जी. बाकी उसके आगे तो प्लेटो, ये प्लेटो का मतलब है जितना मर्जी आप और नेगेटिव में ले जाए, वीनस रिटर्न को इससे आगे फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. And what is the plateau caused by? The plateau is caused by collapse of large veins entering the chest, even when the right atrial pressure falls below some atmospheric pressure. ठीक है. अब वो collapse तो हो जाएंगी लेकिन बंद नहीं होंगी. ठीक है. Note also that the venous return becomes 0 when the right atrial pressure rises to equal the main systemic. अच्छा, अब इधर चलते हैं. अब वो कह रहा है कि जी ये आ गया 0. अब मैंने आपको बताया था जैसे ही कि वो पॉजिटिविटी की रेंज में जाएगा तो क्या होगा कि venous return is starting to fall. ये देखो स्लोप नीचे आ रहा है. As we are going in the positive direction, the slope is coming down and it is going to hit 0 when the mean systemic filling pressure becomes, or the right atrial pressure becomes 7. ठीक है जी. और राइट एट्रियल प्रेशर जो है +7 एंड दैट इज द मीन सिस्टेमिक फिलिंग.
ठीक है जी, यही पॉइंट है ज्वाइन करने का राइट एट्रियल प्रेशर में। जब राइट एट्रियल प्रेशर 7 होगा यानी कि इट इक्वल्स द मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर। देखो ना बेटा, खुद सोचो मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर क्या है। एक लेमैन को भी अगर आप समझा रहे हो, ये प्रेशर वो है जो कि आपका ब्लड चला रहा है सर्कुलेशन में ना। तो अगर राइट एट्रियल प्रेशर ही को आप 7 कर देंगे तो फ्लो कैसे होगी। आपने अगर एक जगह से दूसरी जगह चीज फ्लो करवानी है तो उसमें कोई तो ग्रेडियंट आपने रखना होगा। या तो आप लेवल का ग्रेडियंट रखोगे या प्रेशर का ग्रेडियंट रखोगे, कुछ तो ग्रेडियंट रखना है ना आपने। अगर ग्रेडियंट ही कोई नहीं है तो फ्लो कैसे होगी। ठीक है, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस ग्राफ। सिंपल है बेटा, कोई इसमें इतनी कुछ नहीं है। और जब भी मैं कोई नया बता दिया करूं कि डायग्राम बनानी है, याद रखनी है, तो रोने ना शुरू कर जाया करो। मुझे वैसे भी तुम लोगों की शक्लें नजर आ रही हैं कि कितने रो रहे हैं, कितने सो रहे हैं, कितने जाग रहे हैं। ठीक है, सो यू हैव टू नो दिस ग्राफ, राइट एट्रियल प्रेशर वर्सेस वीनस रिटर्न और मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर का इसके साथ क्या ताल्लुक है। यू हैव टू लर्न दिस, इसके ऊपर नोट आता है। अच्छा, और पढ़ने जरा। This curve shows that when the heart pumping capability becomes diminished and causes the right atrial pressure to rise, the backward force of the rising atrial pressure on the veins of the systemic circulation decreases venous return of blood to the heart. Now, if all nervous circulatory reflexes are prevented from acting, अब ये मैंने बोल्ड में क्यों किया? तो इसलिए किया है क्योंकि अगर नर्वस रिफ्लेक्सेस ऑपरेट कर रही होंगी तो कभी भी वेनस रिटर्न जीरो नहीं होगी ना। तो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर हम सिर्फ 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 क्या देख रहे हैं, राइट एट्रियल प्रेशर और क्या, वेनस रिटर्न और मीन सिस्टम, ये इंटरप्ले है सिर्फ इन चीजों, 3 चीजों का। सो व्हेन द all nervous circulatory reflexes are prevented from acting, venous return decreases to 0 when the right atrial pressure rises to plus 7 millimeters of mercury. You have to learn this sentence. Remember it. Okay? Such a slight rise in right atrial pressure causes a drastic decrease in venous return because any increase in back pressure causes blood to dam up in the systemic circulation instead of returning to the heart. थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़ोगे ना बेटा तो ये आसानी से चीजें समझ आ जाएंगी। इन चीजों से डरो मत, ये सारा कुछ मैंने गाइडेंस से लिया हुआ है। गाइडेंस से लेके मैंने स्लाइड्स इसलिए बनाई है क्योंकि गाइडेंस में बहुत सारे वेनस रिटर्न कर्व दिए हुए, वो आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे नहीं करनी, लेकिन जितना मैंने स्लाइड्स में इधर शो किया हुआ ये आपको आना चाहिए। At the same time that the right atrial pressure is rising and causing venous stasis, pumping by the heart also approaches 0 because of decreased venous return. Obviously, जब venous return ही नहीं होगी तो गरीब वो क्या पंप करेगा। Starling's law ऑपरेट नहीं होगा ना, डैमिंग हो जाएगी तो कैसे पंप करेगा। Both the arterial and venous pressures reach equilibrium when all flow in the systemic circulation ceases at pressures of 7, and this is the mean systemic filling pressure. इसीलिए हम कहते हैं कि हर जगह एक ही हो जाएगा, 7 हो जाएगा मीन पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे पेशेंट की डेथ हो जाएगी क्योंकि देयर इज नो फ्लो। ठीक है, फ्लो इज जीरो। अच्छा जी, when the right atrial pressure falls below 0, that is below atmospheric pressure, any further increase in venous return almost ceases. And by the time the right atrial pressure has fallen to about -2, venous return reaches a plateau. वो plateau भी आपने उसमें देखा, और इसमें अगेन मैंने आपको बता दिया कि आप अगर ये भी कहें कि जी मैं -20 या -50 पे ले जाता हूँ तो कोई इसका फायदा नहीं होगा। और जो plateau है ना, that is going to what collapse of the veins entering the अच्छा। अब दूसरा एक चीज है मीन सर्कुलेटरी फिलिंग। व्हाट था मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर, ये है जी मीन सर्कुलेटरी फिलिंग। व्हाट इज दैट? व्हेन द हार्ट पंपिंग इज स्टॉप्ड बाय शॉकिंग द हार्ट विद इलेक्ट्रिसिटी टू कॉज। अच्छा, अब आप ये देखो कि सर्कुलेटरी का क्या मतलब, सिस्टेमिक का तो मतलब सिस्टेमिक है ना बेटा, सर्कुलेटरी में अब क्या होगा, पल्मोनरी भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, so when the heart pumping is stopped by shocking the heart with electricity to cause ventricular fibrillation or is stopped in any other way, flow of blood everywhere in the circulation ceases a few seconds later. Without blood flow, pressures anywhere in the circulation becomes equal. This equilibrated
pressure level is called the mean circulatory filling pressure. अभी हम मजीद इसको देखें. ठीक है, तो हमने दो टर्म्स पढ़ ली. एक हो गया जी मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर और एक हो गया मीन सिस्टेमिक फिलिंग. अच्छा, अब हम देखते हैं, वो हमने देखे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग मीन सर्कुलेटरी मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर जो 3 थे, और ये आगे मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर. What are the factors of it? Increased blood volume raises mean circulatory filling pressure. करेगा इन्हें raise बेटा, obviously. Then sympathetic nervous stimulation increases mean systemic filling pressure. कैसे? Strong sympathetic stimulation constricts all the systemic blood vessels as well as the large pulmonary blood. देखा आप, यही तो चीज है जिसमें आ गई कि circulatory का मतलब है कि pulmonary included, और systemic का मतलब था सिर्फ systemic arteries, arterioles और veins. ठीक है जी? So, strong sympathetic stimulation constricts all the systemic blood vessels as well as the larger pulmonary blood vessels, even the chambers of the heart. Therefore, the capacity of the system decreases so that at each level of blood volume, the mean circulatory pressure is increased. Now, at normal blood volume, maximal sympathetic stimulation increases the mean circulatory filling pressure from 7 to 14. ठीक है, ये आपने याद. Normal blood volume पर क्या होगा कि, और ये कैसे इंक्रीज होगा? सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन. और सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन का हमारा क्या यहाँ मतलब है बेटा? वो सारे रिफ्लेक्सेस जो मैंने आपको कॉम्पेंसेटेड स्टेज ऑफ शॉक में पढ़ाए हैं ना, वो सारे सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन रिफ्लेक्सेस हैं. वो सब के सब ऑपरेट करेंगे ना जब शॉक होगा तो. ठीक है, या हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, या न्यूरोजेनिक होगा, कार्डियोजेनिक होगा, कुछ भी होगा, सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन रिफ्लेक्सेस तो चलेंगे. और वो अच्छा नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम पर वो कहता है. ठीक है, अगर हाइपोवोलेमिक शॉक होगा तो फिर ये इंक्रीज 14 तक नहीं कर सकते. ठीक है ना, इसीलिए उसने कह दिया प्रोवाइडेड ब्लड वॉल्यूम इज राइट. Conversely, complete inhibition of the sympathetic nervous system relaxes both the blood vessels and heart, decreasing the mean circulatory filling pressure on the norm value of 7 down to 4. हाँ, अब हम आ जाते हैं कि mean systemic filling pressure और mean circulatory filling pressure का क्या relationship. Mean systemic filling pressure is slightly different from mean circulatory filling pressure. It is the pressure measured everywhere in the systemic circulation after blood flow has been stopped by clamping the large blood vessels at the heart. So the pressures in the systemic circulation can be measured independently from those in the pulmonary. The mean systemic filling pressure, although almost impossible to measure in a live animal, is almost always nearly equal to the mean circulatory filling pressure because the pulmonary circulation has less than 1/8 as much capacitance as the systemic circulation and only about 1/10 as much blood. अब उसने वजह बता दी है. Although हम इन दोनों चीजों को डिफरेंटली कह रहे हैं, कहना भी चाहिए क्योंकि सिस्टेमिक का मतलब सिस्टेमिक है और पल्मोनरी का मतलब पल्मोनरी. अब हमने जब इन दोनों को इकट्ठा करना है, यानी सिस्टेमिक और पल्मोनरी को, उसको हमने सर्कुलेटरी कह दिया. लेकिन हम कहते हैं कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर इज इक्वल टू मीन सिस्टेमिक. क्यों? दो वजूहत उसने बताए हैं. Because the pulmonary circulation has less than only 1/8 as much capacitance as the systemic circulation, about 1/8 as much blood volume. अब आपने ये रीजन को याद रखना. मैं अंडरलाइन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता आप इसके स्लाइड्स कॉपी कर रहे हो, तो यू शुड रिमेंबर के व्हाट इज हैपनिंग. Expressing this another way, the greater the degree to which the system is filled, the easier it is for blood to flow into the heart. The lesser the degree to which the system is filled, the more difficult it is for blood flow to the heart. इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या ये हुआ बेटा कि जो हाइपोवोलेमिक शॉक है वो सबसे डेंजरस होगा ना कंट्रोल करना, क्योंकि जब तक आप ब्लड वॉल्यूम नहीं डाल दोगे, जो नर्वस रेगुलेशन है उसने पीछे कह दिया ना कि ब्लड वॉल्यूम अगर आप पूरा नहीं करोगे तो नर्वस रेगुलेशन भी पूरी तरह काम नहीं कर सकते. ठीक है, अच्छा अब मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर को PSF में हमने डिफाइन किया. अच्छा अब ये सिर्फ समझने के लिए, बेशक इसको करना याद या ना करना. अब अगेन इन्हीं दोनों में है जी वीनस रिटर्न लीटर्स पर मिनट एंड देन यू हैव द राइट एट्रियल प्रेशर.
राइट एट्रियल प्रेशर, उस ग्राफ से ये ग्राफ क्यों फर्क है कि इसमें जीरो जो है वो थोड़ा सा और लेफ्ट साइड पे चला गया। अब हम फिजियोलॉजिकल लिमिट्स देख रहे हैं ना, उसने कह दिया कि -4 पे जी प्लेटो आ जाता है और उसके बियॉन्ड नहीं जाता। ठीक है जी, हम बात मान लेते हैं। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब क्या हो कि सारा ड्रामा जो है ना वो -4 और +4 के बीच में चल रहा है एक्चुअली। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या नॉर्मल देख लेते हैं पहले कि -4 पे प्लेटो आ गया ये। ठीक है, उसके बाद 0 तक जो है ना वो थोड़ा सा डिक्रीज करना शुरू किया। इसका मतलब आइडियल सिचुएशन क्या है, -4, लेकिन आइडियली इतना होता नहीं, यूजुअली 0 ही होता है। ठीक है, नॉर्मल से वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, होता गया होता गया होता गया, और जी 7 पे आके क्या हुआ जी, मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर 7 है, राइट एट्रियल प्रेशर भी ऑब्वियसली 7 है। क्यों भला इनको इक्वेट करें? व्हाई आर वी इक्वेटिंग राइट एट्रियल प्रेशर टू मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर? बेटा बिकॉज ऑफ सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा। जो दो लार्ज वेन्स है वो इधर ही एम्प्टी होनी है ना, तो इस कॉन्टिन्यूटी में आ गया ना राइट एट्रियल प्रेशर एज अ पार्ट ऑफ द सिस्टमिक सर्कुलेशन बन गया, दो इट इज इन द हार्ट। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम जी हायर लेवल पे। पहले चलो पहले लोअर देखिए। अब हम देख रहे हैं कि जी वीनस रिटर्न हमारा काम है, यानी ब्लड वॉल्यूम का। अब आप ये देखो कि ये मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर 3.5 के ऊपर राइट एट्रियल प्रेशर पे जीरो पे आ। क्या मतलब हुआ इसका कि आप जब ब्लड वॉल्यूम ही कम होगा ना तो क्या होगा कि मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर भी कम पे राइट एट्रियल प्रेशर पे जीरो भी हो सकता है। ये मतलब अब हाई पे आ जाते हैं। अगर आपने ब्लड लगा दिया पेशेंट को और या कोई भी, इसीलिए बेटा कहा था कि अगर हाइपोवोलेमिक शॉक है तो सबसे पहले उसका ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करें। ठीक है, आपके पास ब्लड है, ब्लड लगा दें, आपके पास प्लाज्मा है, प्लाज्मा लगा दें, रिंगर्स लगा दें, इवन नॉर्मल सेलाइन लगा दें, बाकी चीजें हम बाद में देख लेंगे, सेल्स कितने कम है या ज्यादा है, आपने उसका ब्लड वॉल्यूम मेंटेन। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे now it is coming down and ये देखो 14 उसने कहा था ना कि when all the nervous reflexes are operating and the blood volume is normal, तो आप क्या कर सकते हो, venous return को आप इतना ज्यादा कर सकते हो और मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर को 14 कर सकते हो। ठीक है जी, लास्ट स्लाइड। When pressure gradient for venous return is zero, there is no venous return. When the right atrial pressure rises to equal the mean systemic filling pressure, there is no longer any pressure difference between the peripheral veins and vessels and right atrium. मैंने बता दिया आपको पहले। Consequently, there can no longer be any blood flow from the peripheral vessels back to the right atrium. क्यों? क्योंकि आपने तो gradient ही कोई नहीं रखा। Gradient कोई रखोगे तो वापस आएगा ना। However, when the right atrial pressure falls progressively lower than mean systemic filling, मुझे तो डिस्कनेक्टेड नहीं आ रहा। However, when the right atrial pressure falls progressively lower than the mean systemic filling pressure, blood flow to the heart increases proportionally. Hence, the greater the difference between mean systemic filling pressure and right atrial pressure, the greater becomes the difference. ये आपने याद करना है। ठीक है जी? Therefore, the difference between these two pressures is called the pressure gradient for venous return. ये भी आपने याद। ठीक है जी? चलो, this finishes circulation और जितना आपको मैंने बताना था, and the rest of the lectures will be taken by Dr. Bushra, and I want you to keep in line please, 5 minutes में आप लोग अपनी roll call दे दें।